हेलो दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मशीनों को देखा होगा, जिनमें से कुछ मशीनें औद्योगिक क्षेत्र में और कुछ मशीनें आपके घरों में उपयोग में आती हैं। दोस्तों, इन मशीनों का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। दोस्तों, आपने कभी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में चप्पल का उपयोग तो किया ही होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि इन चप्पलों को किस तरह से फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं फैक्ट्री हंटर्स। दोस्तों, चप्पल बनाने के लिए सबसे पहले चप्पल के नीचे का सोल तैयार किया जाता है, जिसके लिए सोल बनाने वाले मटेरियल को एक मशीन में डाला जाता है। Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. जहाँ उन सोल्स को एक साथ रखकर एक प्रिंटिंग मशीन में भेजा जाता है। इस तरह से उन सोल्स पर अलग अलग तरह के चित्रों व कलरों को प्रिंट कर दिया जाता है, जिससे चप्पल दिखने में और भी ज्यादा